that, we can use ChatGPT to write a script, use that script as a prompt for Midjourney. We can make a short movie. What? Yeah. ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है. आई होप नथिंग इलीगल कम्स अप. तो मैं चैट जीपीटी आगे अपने हियर टाइप समथिंग. व्हाट डू यू वांट टू टाइप? Okay. दिस इज चैट जीपीटी. मुझे बता दे, मैं लिख लेता हूँ. I mean, what do you want to make? Let's make a fictional story. Can you make a fictional story on Yeah. Midjourney? Yeah. Okay. So let's define our characters first. ठीक है. Okay. We'll have a guy and a girl. ठीक है. So you can write a personality description of a really smart guy who likes space, who wants to become an astronaut. ऐसा कुछ. Let's just define our characters. Write a description of a really smart computer graduate who wants to become an astronaut. Guys, sorry for my slow typing. मैं उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ. मैं अली अब्दाल नहीं हूँ. मैंने keyboard.com पे जाके टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है. What a description of a really smart guy who, just say, let's make it fucking weird. Who loves knitting. And is obsessed with money plants. And is obsessed with, can we just say money instead? No, that's too common. No, money plants. मैं जो गांड फट जाएगी इस AI की, ये हैंडल नहीं कर पाएगा. ये कौन सा prompt engineer आ गया? ठीक है ब्रो, आ रहा है. Meet Jack. Jack is a brilliant young man with a passion for knitting and an obsession with money plants. He's always been fascinated by the intricate patterns and techniques involved in knitting and spends hours every day working on new projects. But Jack's real love is for money plants. He has a whole room in his house dedicated to growing and caring for these beautiful plants. He spends hours each day tending to them, making sure they have the right amount of sunlight and water, and constantly researching new ways to help them thrive. Despite his love for knitting and money plants, Jack is also incredibly intelligent. He excels in school and has a natural aptitude for math and science. Interesting. हमने अब really smart guy बोला था, automatically math and science आया है, right? So that's a bias. Yeah, so that's a bias. Is that a thing? It is a big issue right now. Midjourney में भी if you type a doctor, कोई लड़का ही आता है. Nurse डालोगे तो कोई लड़की आती है. Ooh, इनको annotate ने program करा है लगता है. He's always looking for new challenges to help him continue to grow and learn, and known for his innovative and creative problem-solving skills. Overall, Jack is a unique and fascinating individual with a love for both the creative and the practical. He's a driven, intelligent, and always looking for new ways to improve and succeed. Should we regenerate this? No, अब से summarize this in one sentence. तो वो तो वही है हमारा. अब हम मिड जर्नी को करेंगे. नहीं, हमने उसको बोला अब तू क्लूज निकाल. अब let's see what it summarizes for. So I should just put it on ChatGPT again? हाँ, summarize this entire description in 2 lines. Summarize this description in 2 lines. Yeah. वो समझ जाएगा कि पीछे वाला description है. सही है बहनचोद. Jack is the smart and creative individual. ये तो ऐसा लग रहा है किसी के लिंक वो CV के अंदर वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे? Objective. Career objective. Jack is a smart and creative individual with a passion for knitting and an obsession with money plants. Perfect. ठीक है. He excels in school and has a natural aptitude for math and science. Perfect. ठीक है. Now let's copy this entire thing. Let's open Midjourney. Okay. Cool. भाई ये interactive podcast. Let's go. ठीक है. तो यहाँ पे तेरा welcome to Ansh's Midjourney आ रखा है. Yes. ठीक है. Now let me teach you how to write a prompt. Okay. ठीक है. You go नीचे जो मेरा text field है. हाँ. उसमें slash type कर. हाँ. And type imagine. अब प्रॉम्प्ट आ रहा होगा. आ गया. हाँ ठीक है. टाइप क्लिक कर इस पे. हाँ. अब इसमें चैट जीपीटी से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दे. डन. बट देयर इज वन थिंग दैट यू हैव टू डू. जैक हटा दे ऐसे करके अ बॉय विद ऑल दीज एडजेक्टिव्स. अ बॉय हु स्मार्ट ऐसे. अ बॉय हु समझ गया मैं. बॉय बिकॉज़ इट डज नॉट टेक नेम्स. A boy who is... You'll confuse him. He'll probably pick something जो Jack जैसा ही दिखता हो. Who is smart and a creative individual. Guys, मैं हूँ prompt engineer. मैं यहाँ पे अब वो भी कर रहा हूँ live grammar edit. A boy who's a smart and creative individual with a passion for knitting and an obsession with money plants. Yeah. He excels in school and is ठीक है. Money plants तक ही कर दे. ठीक है. नहीं, but let's also have the next one, no? ताकि उसका स्कूल का aptitude भी देख पाए, सब कुछ हो पाए. अब इसमें 2-3 changes है जिससे ये prompt next level हो जाएगा. ठीक है. Okay. तो just before the starting of the prompt, a boy, उससे पहले लिख 3D, hyper realistic. Prompt के just पहले यहाँ पे. और इसे कैसे लिखना है with a slash? नहीं बस 3D, hyper realistic. 3D, hyper realistic. Hyper realistic. अब हम basically उसका painting style बता रहे हैं. How it should look visually, right? Octane render. एक second. What is an octane render? It's like this engine, like a rendering engine. Super interesting, bro. This is far more complicated than DALL-E because DALL-E के अंदर क्या था कि Van Gogh style painting of a shark riding a surfboard. That's it. चल जाता था उसमें काम. नहीं, मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है. मुझे crazy. अब full stop मारना है इस पे या नहीं? कॉमा के बाद boy सब डाल दिया. ये देखना 3D hyper realistic octane render. अब यहाँ कॉमा डालूं?
हाँ कॉमा डालना है, रेंडर और बॉय, ठीक है, नाउ प्रेस एंटर। You sure? या चेक कर लिया 3D कॉमा अगर गलत होगा हाइपररियलिस्टिक फिर से कॉमा डालेंगे। ऑक्टेन रेंडर कॉमा 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 या फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे? फुल स्टॉप कभी भी नहीं आता, Full सिर्फ stop कभी भी नहीं कॉमास आता। आते हैं। इट्स Nice. ऑल अ लिस्ट ऑफ I'm gonna press enter now. Mid journey bot बना रहा है. ओह या Waiting to start. 0%। अब क्या होगा, ये ना ब्लरी इमेज से शुरू करेगा, इनको कहते हैं साइकिल्स। Okay. इसके ना स्टेप्स होते थोड़ा हैं, माइक वो कर ले हाँ. तो इसमें अभी प्री डिफाइंड क्या होता है, 3 स्टेप्स, आपको 3 प्रीव्यूज दिखते हैं कि एक ब्लर्ड इमेज से मैं फाइनल आउटकम पे कैसे आऊँ। तो एट दिस मोमेंट ये लेटेंट स्पेस में जा रहा है और ये सारे वर्ड्स ढूंढ रहा है। वो जो मैंने बोला था ना 500 पैरामीटर्स, इस पे लाखों वर्ड्स है। हाँ. अभी कह रहे 3D बॉय मनी प्लांट, He made something. You wanna see it? बन रहा होगा अभी, तो अभी बना नहीं होगा। 100% हो गया। At 62%. It also says fast at the end. What does that mean? वो लो रेजोल्यूशन रेंडर हुआ है अभी, दिखा? Bro, crazy. Oh man, I can see it. Oh, अच्छा, the fun part is it is assuming that it's a kid. हाँ, Because we said it is a a boy. boy. अगर हम 24 Man year old, करते? हाँ। Now this is where things become interesting. ये जो तुझे नीचे कमांड्स दिख रही है ना, हाँ. अब ये U1, U2, U3 का मतलब है कि तू इसको फिर से रन कर सकता है। मतलब Okay. जो नीचे सारी कमांड्स है, तो लेट कर ले, मैंने V1 सेलेक्ट करा, तो अपर लेफ्ट वाली कॉर्नर से भाई 4 इमेजेस है ना, हाँ हाँ. तो तू ऐसे V1 पे क्लिक करे एक बारी। For people who are just listening, हम लोग basically Discord के server पे अंश They के will be जिसके able to अंदर see the screen recording. या no, I'm just for people who are just listening. Okay. हम अंश के Discord के server पे हम लोगों ने ये prompt डाला था chat GPT से, and now we have the image of what looks like a better looking Harry Potter. But it looks so real, no? It looks fucking real. It looks like, you know, like आजकल जैसे बहुत अच्छे like GTA 6 के अंदर अगर कोई बच्चा होता ना, it would look like that. Yeah. No, because of जैसे ये जो Rockstar games है, how hyper realistic they are Yeah. in their cutscenes also. So what do I do now with these prompts? तो with these if you commands? select V1, right? तो V1 पे click करेंगे। इनका मतलब क्या है? Like what do they represent? V1, V2, V3 is ये जो 4 versions है, I think U is for iterations. I'm not sure. Okay, we'll find out. Yeah, U is So for iterations. we do V1. हाँ. What is that going to do? So it's going to individually take out that one image, and now you can build upon that image as well. Yeah, you can download it in high resolution. Okay, it says 3D hyperrealistic octane render आ गया है. Mid journey अब इसका अभी बनाएगा. और हम cancel भी कर सकते हैं job Yeah, को. yeah, we So can. now it says पहले it just said कि हमने बनाया. Now it says variations by Ansh Mehra. हाँ, तो अब V1 पे तू build कर रहा है और तो समझ रहा है? And the first few look hideous. मतलब जैसे वो नहीं होता print करते हो तो bleed हो जाता है color. Yeah. Interesting. अब इसमें और इंटरेस्टिंग ये हो जाता है It's कि done. Yeah, it's done ना. Now let's have our female character. Okay. Let's have a witch. So should I directly enter it here or chat GPT? Chat GPT. तो ये AI tools लोग typically आपस में यूज करते हैं इनको cooperation? नहीं. I have been using them as a combination. वो तो एक काम करते हैं, मिड जर्नी पे आप डायरेक्ट ट्राई करते हैं, ठीक है? On mid journey let's write 3D hyper realistic. Can we do another style? Non-hyper कुछ और? हाँ, so we can do like a flat illustration, detailed illustration, Okay. detailed black and white illustration. Detail BNW या black and white पूरा Black लिखो? and white कर दे, monochromatic कर दे. Detailed mono. इसमें English आनी भी जरूरी है और painting style जरूरी है. I think this is probably the biggest case for learning art history and learning दुनिया में किस तरह की images बनती हैं, right? Detailed monochromatic. Made with ink. Actually इतना complicated? हाँ, बहुत difficult दे देना. 3D detailed monochromatic. Made with ink. ये without comma? नहीं, with comma. तो detailed के बाद comma आएगा? हाँ. Okay. Made with ink. 3D detailed monochromatic made with ink illustration. Illustration. Bro, okay. 18-year-old witch. Thanks for keeping it legal. 3D detailed monochromatic made with ink illustration. All of these have a comma by the way. Yeah. ठीक They're है? all parameters. ठीक है. अब यहाँ पे imagine करना है. मैंने imagine नहीं 18-year-old करा. witch है ना? मैंने imagine नहीं करा ऐसे. Oh हाँ, you have to start with imagine. So Okay. that is how you send the prompt. #/imagine उसके आगे prompt. Interesting. So I have to delete this because it. एक second. हाँ, now I have a prompt. Imagine prompt. Yes. 3D detailed monochromatic made with ink illustration. Comma. 18-year-old witch. Let's have like a really old, like 130-year-old witch. ठीक है? 130-year-old witch who is in her potions laboratory. Who is in her Magic potions laboratory. who is in her magic potions laboratory With
with something very weird in her hand. Let's pick something very unique. With a picture of Baba Cycle. Can we do Baba Cycle? No, it won't pick humans, ऐसे. But that would have been amazing. With a sunflower in her hand. Magic Potion Laboratory wearing a WWE costume. Can we do that? Let's It's do gonna that. look so weird, bro. नहीं, it will look amazing. That's the thing. ठीक है, कर दें? हाँ. और कुछ बताना है उसके बारे में? अच्छा, इसमें काम कर dash 2:3 कर दे. So अब क्या होगा, एक लंबी इमेज आएगी. That is the ratio that we're defining. So how do I dash? हाँ, dash ये वाला dash ना? हाँ, dash 2:3. 2:3. In fact, space डाल. इसके बाद? हाँ, dash S. अब single S. Dash. Single S. हाँ, space 1000. Space पूरा लिखूं मैं? नहीं, बस keyboard space कर. हाँ. 1000. That's the number of details. Do you want to see what that looks like? Yeah, I think dash S है. Let's try. मुझे याद नहीं आ रहा. I think it's dash S only. For all commands in Python, yeah. Dash S कर दे. Nothing in the middle between S and 1000? No. Okay. I'm going to press देखा? enter. Here, double check. There is space, no? हाँ, S के बाद space होना ज़रूरी है. हाँ. That's it? Yeah, press enter? Let's see. It's a very complex वो. Fuck. 0% Discord मेरे को आया? distract कर रहा है. कह रहा है look for a holiday gift. 0% आ गया. ठीक है. It's going to be so unique. I'm Bro, so how do excited. you learn these commands? Like, what is the way to learn? Mic थोड़ा सा pass करके. Many ways. So for mid journey तो यार it's imagine prompt के अंदर you keep trying and testing stuff. इनका एक showcase करके website है. Go to that website, see the final image, and then the prompts. But they have a very detailed documentation as well. Whoa, bro. I think Is it on point? मैं बहुत ही hideous वो Red Woman imagine कर रहा था Game of Thrones वाली. But I think they have, oh my, bro, she's cute. One of them, she's 130 साल वाला इन्होंने, but she's a witch, right? तो वो फर्क नहीं पड़ता. Oh, अगर ये सोच के गया तो बहुत epic है. बहुत epic है. बन गया. It's here. You want to see it? Yeah, sure. It's black and white, na? Dude, this looks like a movie poster. Yeah. This is amazing. And let me see if she's in a WWE. I think WWE वाली चीज़ इतनी registered नहीं हुई. That's probably the problem. But irrespective, पहली 2-3, the first 2-3 images, she looks old. She looks like she belongs at Harvard. Sorry, Hogwarts. Yeah, it looks very अब ये variation वाला button है. ये है कि इसी prompt को फिर से run कर दे. करें? हाँ, कर लो. अब See different what result happens. आएगा. अब फिर से इन latent space में गया है and because of diffusion, a different image will come in. It is a longer image. It's harder to see her face anymore. जैसे वहाँ पे बहुत clear. भाई अब crazy. क्या होता है कि कुछ ऐसे tools है जैसे Lumen 5 हो गया या अलग अलग video editing tools हो गए जहाँ पे you put scripts and these images, it'll create a YouTube video out of it. तो अब तूने क्या करा, तूने text to speech भी कर दिया, तो अब वो story बोल भी रहा है जो chat GPT ने दी और इन images का slide show बना दिया. So now she's getting colored. Why is that? Bro, वो latent space में ढूंढ रहा है Oh, चीजें, कुछ भी back हो at it सकता है. again. So, yeah, interesting. This is what we have. पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए पिन कमेंट पे क्लिक करें.